Hello students, so we are going to start with class 10th Civics chapter 1, that is power sharing. Now what do we mean by power sharing? Power sharing is a way of sharing power so that everybody's opinions, views and ideas are heard and all of their problems are also seen to bring out better solutions. Right? So in this video we'll be studying about Sri Lanka, because in this chapter we have two countries, Sri Lanka and Belgium. We'll be discussing about Belgium in the next video. In this video we'll be talking about Sri Lanka and the majoritarianism in Sri Lanka and the causes of the majoritarian rule in Sri Lanka. Right, so let's begin with the video. So first we have Sri Lanka. Now everybody, all of us know where Sri Lanka is. So it is an island nation situated in the southern coast of the Indian Peninsula. वो एक island nation है जो कि तमिलनाडु के नीचे Indian Peninsula के नीचे पाया जाता है. Population is about 2 crores and major social groups. There are two major social groups in Sri Lanka. One is Sinhala speakers. Number one is Sinhala speakers and number two is Tamil speakers. So the Sinhala speakers are about 74% of the total population, right? And the Tamil speakers are 18% of the total population. Most of them are Buddhist. Sinhala speakers, most of them are Buddhist. So they preach, promote, and practice Buddhism, right? Whereas in Tamil speakers, there are again two categories under Tamil speakers. Number one is Sri Lankan Tamils, who are the 13%, and another is the Indian Tamils. Next, we have most of them are Hindus or Muslims, right? So, unlike the Sinhala speakers, the Tamil speakers, most of them are Hindus or Muslims. Next, we'll talk about the majoritarianism in Sri Lanka. So, Sri Lanka got its independence in 1948, right after India got its independence in 1947. So, due to the majority, Sinhala community wanted to secure dominance over the government. अब क्योंकि Sinhala community majority में था, उस country में Sinhala को government में domination चाहिए था, so that उनके सारे rules वो जो बनाए वो सब कुछ apply हो. Democratically elected government adopted majoritarian measures. तो जो democratically elected government था वो majoritarian का मतलब है कि हम सिर्फ majority जो group है उनकी बात मानेंगे, वो government चलाता है. तो जो भी सिन्हला community के लोग थे वो majority में थे और वो जो rules बनाते थे वही लागू होता था country में, ठीक है. और वो सारे जो rules थे वो they were in the interest of the Sinhala community, right? So in 1965 Sinhala was recognized as the only official language via an act. तो Sinhala को in 1965 एकमात्र language के रूप से एक act के द्वारा उसको recognize किया गया country में, श्रीलंका में. Preferential policies favoring the Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब ज़्यादातर सिन्हला एप्लीकेंट्स को प्रेफर किया जाता था फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. अगर वहाँ पे तमिल्स आ जाते थे तो उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता था. एंड बुद्धिज्म वाज प्रमोटेड सिंपली बिकॉज बुद्धिज्म वो लोग प्रैक्टिस करते थे तो वो ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया रादर देन प्रमोटिंग हिंदुइज्म और मुस्लिम. Causes of majoritarian rule increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Now, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस सिन्हला गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन रूल के हिसाब से जो निकाला उसके तहत जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको थोड़ा सा एलियनेशन फील हुआ इन द सेंस दैट दे फेल्ट दैट दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, राइट? बिकॉज उनके लिए उनके पर्सपेक्टिव से किसी ने कुछ भी नहीं देखा था. देयर opinions and ideas were not being heard, right? So no major political party was sensitive towards their language and culture. उनके language और culture और traditions के लिए कोई भी political party sensitive नहीं था, कोई भी उनकी बात उनके मुद्दे नहीं उठाता था. Constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. तो constitution और जो government था और जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज थे वो उनको इक्वल जो इन श्रीलंकन तमिल्स थे उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से
इनकार करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट एंड गेटिंग यूनिवर्सिटी पोजीशंस, और उनके जितने भी इंटरेस्ट से थे उनको सब वो इग्नोर करते थे. नाउ द श्रीलंकन तमिल्स फॉर्म्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर, उन्होंने अब जो श्रीलंका के तमिल लोग थे उन्होंने पार्टीज और स्ट्रगल शुरू किया फॉर नंबर वन द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब क्योंकि सिनला सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज था तो उनको लग रहा था कि दे वर फीलिंग वेरी एलिएनेटेड, सो दे वांटेड तमिल also as an official language. For regional autonomy, number two, and number three, equality of opportunity in securing education and job. तो उनको equality भी चाहिए था of opportunity in securing education and jobs. उनको jobs और education के लिए भी equal rights चाहिए थे, just like how the Sinhala people were getting. But their demands were repeatedly denied. अब क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी में सिन्हला थे, 74% थे, तो फिर उनके जितने भी तमिल्स लोगों के जितने भी डिमांड्स थे वो सब उन्होंने रिपीटेडली डिनाई किया. By 1980s, many political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam. अब Elam का मतलब is state. So Elam is equals to state. So in 1980s, many political organizations were formed and they wanted an independent Tamil Elam, or you could say an independent Tamil nation in northern and eastern parts of Sri Lanka. Why northern and eastern parts of Sri Lanka? Because ज़्यादातर जो श्रीलंकन तमिल्स थे they used to live in northern and the eastern parts of Sri Lanka, right? Now, in many of these political organizations, one of the most famous political organization का नाम is Liberation Tigers of Tamil Elam, LTTE. Okay, so you need to remember this name. Next, this started to turn out into a massive conflict and soon a civil war. अब क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया था, इसके they were asking for their rights and their equal opportunity in jobs, and they wanted to promote their culture, the Sri Lankan Tamils, whereas the Sinhala were repeatedly denying. So this turned into a massive conflict. एक बहुत ही बड़ा conflict में ये वो हो गया, परिवर्तित हो गया, and soon एक बहुत ही बड़े सिविल वॉर में ये टर्न आउट हो गया. नाउ thousands of people were killed, many were forced to leave the country as refugees and many lost their livelihoods. तो ऐसे इस सिविल वॉर के कारण बहुत लोगों की जान भी गई है और बहुत लोग को अपना कंट्री छोड़ के एज रेफ्यूजीज दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ा, जस्ट लाइक इंडिया. उनके नेबर श्रीलंका के सबसे करीबी नेबर इंडिया है, तो इंडिया में काफ़ी लोगों को एज रेफ्यूजीज आना पड़ा एंड मेनी लॉस देयर लाइवलीहुड्स, और बहुत लोगों के रोजी रोटी कमाने का और खाने का भी जो साधन थे वो सब बंद हो गए. एंड इट फाइनली एंडेड इन 2009. So this was the story about Sri Lanka and the government and how वहाँ पे पावर शेयरिंग ना होने की वजह से इतने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आए और वो turned into a civil war.